माननीय मुख्य अतिथि महोदय लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार, परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पश्चिमी कमान की ओर से मैं लेफ्टिनेंट कर्नल वासु गुप्ता और मेरे साथी लेफ्टिनेंट कीर्ति शर्मा आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जो मैदान में उतरे हैं शान से, उनके कदमों में झुकती है ज़मीं। जो मैदान में उतरे हैं शान से, उनके कदमों में झुकती है ज़मीं। चमकती तलवार है उनके हाथ में, आंखों में है जीत की रोशनी। वीर है वो जो डरते नहीं, वीर है वो जो डरते नहीं, हर आंधी हर तूफान से लड़ते हैं। दुश्मन के हौसले मिटाते हुए वो ध्वज को हमेशा ऊंचा रखते हैं। सीना है फौलाद का, दिल में आग, कसम खाई है सरहद की लाज की। अपने लहू से जो लिखी कहानी, हर गीत में जिंदा रहेगी जवानी। जहां वीरता की महक बिखरती है, वहां हार भी जीत की बात करती है। जहां वीरता की महक बिखरती है, वहां हार भी जीत की बात करती है। ये सपूत, ये धरती के लाल हमेशा रहेंगे गौरव की मिसाल। पश्चिमी कमान हमेशा देश की सीमाओं की रक्षा और शांति व्यवस्था के लिए तत्पर रहा है। आज का दिन हमारे लिए गर्व और सम्मान का दिन है, क्योंकि हम यहाँ पश्चिमी कमान के वीर सैनिकों के बलिदान, संघर्ष और साहस को नमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। A soldier's bond with motherland is beyond words, as one beautifully expresses, मम रक्तम अपि भारतस्य भूमौ समाहितं भविष्यति, यदा अहम आत्मनम बलिदानम तान सिनश्चयामि. My blood will also be absorbed into the soil of India when I water it with my sacrifice. Those words remind us of the ultimate price that a soldier is willing to pay, not just for the protection of our borders, but for the very soul of our nation. Today, we celebrate their valor and with deep gratitude recognize their sacrifice. Today's ceremony is not just a celebration of achievements, but a testament to the values that define the Indian Army. With this spirit, let us continue this meaningful event, honoring the individuals and the ideals that make this gathering truly exceptional. पश्चिमी कमान के सैनिकों ने न केवल सीमाओं की रक्षा की, बल्कि विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए अपने मिशन में सफलता प्राप्त की है। पश्चिमी कमान के सैनिकों ने अपने बलिदान को इतिहास के पन्नों में दर्ज कराकर अपने बलिदान और त्याग की मिसाल को हमेशा के लिए अमर कर दिया है। पश्चिमी कमान का इतिहास वीरता की गाथाओं से भरा हुआ है। सैनिक जो युद्ध के मैदान में लड़ते हैं, वे न केवल अपनी मातृभूमि की सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि अपनी जान, रक्त और संकल्प को राष्ट्र के लिए समर्पित करते हैं। इन जवानों का हौसला, उनका संकल्प और उनके बलिदानों का परिणाम है कि आज हमारा देश हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। आज हमारा पश्चिमी कमान के सम्मान समारोह में सम्मिलित होना गौरव की बात है। पश्चिमी कमान के हर सैनिक को हम नमन अर्पित करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश हमेशा शांति और समृद्धि का प्रतीक बना रहे। भारतीय सेना शौर्य, सर्वोच्च बलिदान और त्याग की मिसाल है। भारतीय तिरंगा अनकहे शब्दों में राष्ट्र को ये संदेश देता है कि इस वतन पर बलिदान देने के लिए जाबाज हमेशा अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तत्पर हैं। दुश्मन के हर एक नापाक इरादे से देश को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय सेना किसी भी हद तक जा सकती है। रेगिस्तान की तपिश, ग्लेशियर्स की हड्डियां गला देने वाली ठंड और बर्फीले तूफानों का सामना करते हुए भारतीय सैनिक के अडिग इरादे दुश्मन के किसी भी मंसूबे को नस्ते नाबूद कर सकते हैं। भारतीय सैनिक आखिरी सांस और आखिरी गोली तक लड़ने का जज्बा रखते हैं। इन शूरवीरों को शत शत नमन। I request your kind attention
towards few instructions for the smooth conduct of this investiture ceremony. Once the ceremony starts, you are requested to be seated in the hall. You are requested to kindly switch off the mobile phone as it will disturb the ceremony. Post the ceremony, when GOC in C leaves the Zorawar Hall, the Veer Naris are requested to use the front exit door towards your left for interaction with GOC in C. All award winners are requested to use the rear exit door towards left side to the area where group photograph will be taken. Other than award winners, all are requested to move to the foyer area behind the hall using the exit on your rear right. All guests may visit the drone display next to the Ashoka Hall once the ceremony ends. Refreshment and lunch is catered for in the reception hall and lower exhibition hall. बदल जाऊं तो मेरा नाम वक्त रखना, थम जाऊं तो हालात रखना, छलक जाऊं तो मुझे जज्बात कहना, बिछड़ जाऊं तो त्याग, महसूस हो जाऊं तो दोस्त, तिरंगे से लिपट के आऊं तो भारत माँ की जय कहना, तिरंगे से लिपट के आऊं तो भारत माँ की जय कहना। देवियों और सज्जनों, कुछ ही समय में माननीय मुख्य अतिथि महोदय लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पश्चिमी कमान का आगमन होगा। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न कमांड is an alumnus of Sainik School, Ghodakhal, National Defence Academy, Khadakwasla, and Indian Military Academy, Dehradun. He was commissioned in 23rd Battalion of the Rajput Regiment in June 1986. The general officer has served in Siachen Glacier along the line of control both in 15 and 16 Corps and along the line of actual control in 3, 14 and 33 Corps. He commanded his battalion twice at Torna in Uri sector and at Taksing in Western Ralp. He has also commanded an infantry brigade along western borders, Army Headquarters Reserved Mountain Division along northern borders, and Mountain Strike Corps West. He has done all important courses which include Defense Services Staff Course and National Defense College course. He is a distinguished graduate of National War College, USA, has been an instructor in Indian Military Training Team in Bhutan, and a directing staff at Defense Services Staff College. His staff appointments include Grade 1 appointment in Military Operations Directorate, Brigadier General Staff in Headquarters 3 Corps and Headquarters Central Command, and Director General of Staff Duties in Army Headquarters. Prior to taking over as General Officer Commanding in Chief, Western Command, he was tenating the appointment of Director General of Military Operations. The General Officer is also the Colonel of the Rajput Regiment.
Ladies and gentlemen, the Army Commander. Ladies and gentlemen, the national anthem. माननीय मुख्य अतिथि महोदय लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार, परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पश्चिमी कमान, उपस्थित वीर माता, वीर नारी, अधिकारीगण, सरदार साहिबान और बहादुर जवानों का मैं आज के भव्य पश्चिमी कमान अलंकरण समारोह में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस अलंकरण समारोह में उन अधिकारियों और बहादुर जवानों को विभिन्न प्रशंसा पदक प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप उत्कृष्ट कार्य कर अपने कर्तव्य के प्रति निस्वार्थ भावना का परिचय दिया है। आज के इस समारोह में माननीय मुख्य अतिथि महोदय लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार, परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पश्चिमी कमान द्वारा 30 सेना मेडल वीरता, 6 युद्ध सेवा मेडल, 17 सेना मेडल प्रतिष्ठित प्रदान किए जाएंगे, जिनमें 1 बार 2 सेना मेडल प्रतिष्ठित शामिल है और 44 विशिष्ट सेवा मेडल भी प्रदान किए जाएंगे। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करती हूं कि विजेताओं को पदक और प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। सेना मेडल वीरता मरणोपरांत। युद्ध के समय या शांति काल के दौरान दुश्मन के सामने असाधारण साहस, वीरता और कर्तव्य के प्रति समर्पण को मान्यता देने के लिए सेना मेडल वीरता प्रदान किया जाता है। कैप्टन ब्रिजेश थापा, The Army Air Defense 10th Battalion, the Rashtra Rifles. On 14th and 15th July 2024, Captain Brijesh Thapa carried out a search operation based on specific input of presence of terrorists in the forested area of Kishtwar district. During the operation, his column came under indiscriminate fire from the terrorist. His scouts were hit and fell down. The officer dashed forward under intense fire, pulled his injured scouts towards cover, and while controlling situation, brought down heavy fire on the terrorist. However, he was hit by terrorist fire and succumbed to gunshot wounds. For displaying sterling leadership and utter disregard to personal safety, Captain Brijesh Thapa has been awarded Sena Medal
Gallantry posthumously. The award is received by his mother, Srimati Nilima Thapa, and father, Colonel Bhuvnesh Thapa, retired. Srimati Nilima Thapa and Colonel Bhuvnesh Thapa. Lance Naik Stanzin Targias, 5th Battalion, the Ladakh Scouts। 8 अक्टूबर 2023 में भारतीय सेना के एक महत्वपूर्ण पर्वतारोहण अभियान माउंट कुन के दौरान लांस नाइक तांजिन तारगियास ने अदम्य साहस और कर्तव्य परायणता का परिचय दिया। दुर्गम पहाड़ियों और जानलेवा मौसम के बीच उन्होंने स्वेच्छा से आगे बढ़कर समुद्र तल से 20,250 फीट ऊपर कैंप 1 से कैंप 2 के बीच मार्ग खोलने की जिम्मेदारी ली। जब वे पूरी तन्मयता से अपने साथी सैनिकों के लिए रास्ता तैयार कर रहे थे, तभी एक भीषण हिमस्खलन की चपेट में आने से उन्होंने भारतीय सेना की उच्चतम परंपरा के अनुसार सर्वोच्च बलिदान दिया और वीर गति को प्राप्त हुए। अदम्य साहस, असाधारण दृढ़ संकल्प और राष्ट्र के प्रति सर्वोच्च बलिदान के लिए लांस नायक स्तांजिन तारगियास को मरणोपरांत सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी पत्नी वीर नारी श्रीमती दियाचिन स्पाल्जेस। श्रीमती दियाचिन स्पाल्जेस। Rifleman Hilal Ahmed Bhatt, 162nd Battalion, the Territorial Army, 19th Battalion, the राष्ट्र राइफल्स। 8 अक्टूबर 2024 को शेखपुर वन क्षेत्र में एक ऑपरेशन के दौरान राइफलमैन हिलाल अहमद भट्ट ने अपनी जान की परवाह न करते हुए आतंकवादियों की ओर से हो रही भारी गोलाबारी के बीच अपने साथी की जान बचाई और खूंखार आतंकवादियों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए अपने साथी को सुरक्षित निकाल लिया। अतुलनीय साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए राइफलमैन हिलाल अहमद भट्ट को मरणोपरांत सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार ग्रहण करेंगी उनकी पत्नी वीर नारी श्रीमती मरीफा बानू। श्रीमती मरीफा बानू। राइफलमैन मोहित राठौड़, द राजपूताना राइफल्स, 57th बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। 27 जुलाई 2024 की सुबह जम्मू कश्मीर के गुलाब सब सेक्टर में दुश्मन के बॉर्डर एक्शन टीम ने घुसपैठ की कोशिश की। अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना राइफलमैन मोहित राठौड़ अपने बंकर से बाहर निकले और रेंगते हुए दुश्मन के बेहद करीब पहुंच गए। भीषण गोलाबारी के बीच गंभीर रूप से घायल होने और अत्यधिक रक्तस्राव के बावजूद वे तब तक डटे रहे जब तक कि उन्होंने एक आतंकवादी को मार नहीं गिराया। अंततः राष्ट्र की रक्षा करते हुए उन्होंने वीर गति प्राप्त की। इस अदम्य साहस और भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप सर्वोच्च बलिदान के लिए राइफलमैन मोहित राठौड़ को मरणोपरांत सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही हैं उनकी पत्नी वीर नारी श्रीमती रुचि और उनके पिता श्री नाथू सिंह राठौड़। श्रीमती रुचि और श्री नाथू सिंह राठौड़।
युद्ध सेवा मेडल। युद्ध के समय अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण, साहस, असाधारण नेतृत्व और रणनीतिक कौशल को मान्यता देने के लिए युद्ध सेवा मेडल प्रदान किया जाता है। मेजर जनरल संदीप सुदर्शन शारदा, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। मेजर जनरल समीर शरण कार्तिकेय, सेना मेडल। ब्रिगेडियर विवेक गोयल। ब्रिगेडियर सुरजीत कुमार सिंह, सेना मेडल। ब्रिगेडियर अनिरुद्ध चौहान, सेना मेडल बार। ब्रिगेडियर जसविंदर सिंह। सेना मेडल गैलेंट्री, लेफ्टिनेंट कर्नल जितेंद्र बिरौरिया, retired, 666 Army Aviation Squadron. On the 20th of March 2024, Lieutenant Colonel Jitendra Biroria was tasked with a life-saving casualty evacuation at the Siachen Glacier. Operating at a staggering altitude of 18,100 feet, he faced severe whiteout conditions and marginal weather that pushed the limits of aviation. Despite the lack of visibility and the presence of the enemy, Lieutenant Colonel Jitendra Biroria displayed extraordinary flying skills and indomitable courage. He successfully landed his helicopter at the fringes of its capability to rescue a critically injured soldier. His selfless devotion to duty and nerves of steel saved a life and inspired all ranks. For his conspicuous gallantry and utter disregard to personal safety, Lieutenant Colonel Jitendra Biroria has been awarded Sena Medal Gallantry. Lieutenant Colonel Jitendra Biroria. Lieutenant Colonel Vijay Guleria, 4th Battalion, the Ladakh Scouts. On 7th February 2024, Lieutenant Colonel Vijay Guleria voluntarily led the rescue team to carry out casualty evacuation of Naib Subedar Sevang Toldan, suffering from extreme pain and inflammation from a post located at 18,269 feet in the southern glacier. In an operation lasting 12 hours, under extreme temperature and inclement weather,
the officer negotiated gradient of more than 70 degrees, carried the unwell JCO on his back in darkness, and successfully evacuated him, thereby saving his life. For his unparalleled courage, excellent command and control, and exemplary initiative with single-minded devotion to duty, Lieutenant Colonel Vijay Guleria has been awarded Sena Medal Gallantry. Lieutenant Colonel Vijay Guleria. Lieutenant Colonel Ashutosh Ashish, 671 Army Aviation Squadron. On the 16th of August 2024, Lieutenant Colonel Ashutosh Ashish was called upon for a near impossible casualty evacuation close to the line of actual control. Facing treacherous terrain, heavy turbulence, and fading daylight, the officer launched his aircraft without precise coordinates to save a critically injured comrade. In a display of extraordinary piloting skill, he navigated a razor-thin valley and executed a perilous one-skid landing on a boulder in a riverbed, the only spot available in the unforgiving landscape. For his technical finesse, unwavering composure, and conspicuous gallantry in saving a life, Lieutenant Colonel Ashutosh Ashish has been awarded Sena Medal Gallantry. Lieutenant Colonel Ashutosh Ashish. Lieutenant Colonel Mohan Singh, 4th Battalion, the Rajput Regiment. During Operation Sindoor on 9th and 10th May 2025, Lieutenant Colonel Mohan Singh displayed exemplary courage while directing fire on enemy post Pakistan Island, while under heavy artillery fire, sniper, HMG, and RPG fire. His leadership and tactical brilliance resulted in several enemy casualties and complete destruction of the post, which was a critical node of enemy defenses and acted as launchpad for terrorists. In recognition of his exemplary contributions and bold leadership impact on the organization, Lieutenant Colonel Mohan Singh has been awarded Sena Medal Gallantry. Lieutenant Colonel Mohan Singh. Lieutenant Colonel Ashish Khandka, the 3rd Gorkha Rifles, 32nd Battalion, the Rashtra Rifles. Between the 19th and 20th of June 2024, Lieutenant Colonel Ashish Khandka received intelligence of terrorist presence in Sopore, Baramulla. Displaying exceptional situational awareness, the officer rapidly established a tight cordon, trapping 2 foreign terrorists. Upon making contact, he directed effective fire to restrict the enemy's movement, resulting in the neutralization of 1 terrorist. With utter disregard for his own safety, the officer moved through heavy fire to an advantageous position and neutralized the 2nd terrorist at close range. For his conspicuous grit, exemplary combat leadership, and bravery beyond the call of duty, Lieutenant Colonel Ashish Khandka has been awarded Sena Medal Gallantry. Lieutenant Colonel Ashish Khandka. Major Shivang Pathak, the Madras Regiment, 8th Battalion, the Rashtriya Rifles. As team commander for Operation Rock near the line of control in October 2024, Major Shivang Pathak demonstrated
extraordinary tactical patience and nerves of steel. Upon detecting terrorist movement, he withheld fire until the infiltrators were within a mere 10 meters of his position. He personally neutralized the lead terrorist, and despite a massive forest fire breaking out during the ensuing gunfight, he successfully extricated his team without a single casualty. The following day, under direct observation from the enemy post, he led the recovery of the terrorist bodies. For his conspicuous courage and exemplary leadership, Major Shivang Pathak has been awarded Sena Medal Gallantry. Major Shivang Pathak. Major Man Singh Grewal, the Corps of Engineers, 1st Battalion, the Rashtra Rifles. On 6th May 2024, at 22:40 hours, Major Man Singh Grewal launched a cordon and search operation in Kulgam district. The officer, along with quick reaction team, approached the target house and established swift and impregnable cordon. On observing suspicious movement, he alerted his team and opened fire on the terrorists, forcing them to restrict their movement. Thereon, with utter disregard to personal safety, under heavy, effective enemy fire, he directed grenade fire on terrorist location, leading to neutralization of one hardcore terrorist. For displaying exceptional tactical acumen, sheer presence of mind, and courage, Major Man Singh Grewal has been awarded Sena Medal Gallantry. Major Man Singh Grewal. Major Aditya Singh, the Corps of Signals, 38th Battalion, the Rashtriya Rifles. On the 13th of May 2024, Major Aditya Singh was tasked with the critical maintenance of a surveillance camera at a sensitive location vital for monitoring enemy movements. Operating at a staggering altitude of 18,900 feet in barren terrain, the officer faced extremely adverse weather and a rarefied atmosphere. Displaying a dauntless spirit and masterful fieldcraft, he conducted a swift and stealthy patrol in the face of the enemy to ensure the camera's operation. His technical expertise and courageous execution provided the Indian Army with a significant tactical advantage. For his foresight, flawless execution, and exemplary leadership, Major Aditya Singh has been awarded Sena Medal Gallantry. Major Aditya Singh.